Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. Over the past 31 years, I've had the joy of traveling repeatedly to many corners of this vast subcontinent that is India. It is amazing to see how landscapes, culture, food, music, dances, and even languages change every few hundred kilometers that you drive. You see the highest mountains of the world, great seas, bountiful rivers, and best of all, a people whose thoughts and heritage go back a few thousand years. Join us on an enthralling journey. I am traveling again across the whole of India to bring you spectacular India. From the 4th to the 12th centuries, the great university of Nalanda flourished in Bihar. In the 8th century, two more magnificent universities of Vikramshila and Udantpuri were established, not very far from Nalanda. Pilgrims, monks and scholars from every corner of India and from other Asian countries made long and arduous journeys to come to these splendorous centers of learning. At these universities, the austere and ethical message of the Buddha was transformed into the Vajrayana faith, which swiftly spread across the whole of northern India, the Trans-Himalayas and Tibet, Central Asia, China, and from there to Korea and Japan. The Vajra or thunderbolt symbolizes the philosophy which was developed at the universities of Nalanda, Vikramshila and Udantpuri. It was believed that the logic of this philosophy was as clear, striking and indestructible as a thunderbolt. गुरु पद्मसंभव को तो ऐसा एक पंडिता है, महापंडिता है वो. It was here at these great monastic universities that the finest intellectuals of the period debated and analyzed the philosophy of the Buddha. तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने उस मन को जो हमारे पास भी है वो पोटेंशियल, लेकिन हमने उस मन The many aspects of the Buddha's wisdom and compassion were clearly understood, and these were personified in many deities. Thus was created a pantheon of deities for men to meditate upon. Mantras are, we can say, in this time, are like a formula. Somebody, when he practices, when he visualizes himself as a deity, then he can dominate his mind in stronger level. So this is a practice of Tantra. After Eastern India, the Buddhist centers of Kashmir and the Northeast played an important role in the development of Vajrayana Buddhism. Buddhist literature mentions 4 important centers of pilgrimage for devotees. Of these, Udayan and Jalandhar are in the northwest of the Indian subcontinent, and Kamarupa, present-day Assam, is the Pitha in the east of India. Guru Padmasambhav, who had studied at the Nalanda University in Bihar, is known throughout the Himalayan regions as the second Buddha. In the 8th century,
The great Guru swept right across the Himalayas, including Ladakh, Kinnaur, Lahore Spiti, Tibet, all the way up to Arunachal Pradesh, spreading Buddhism everywhere. The holy relics of the Guru are believed to be enshrined in Hajo here in Assam. This site is deeply revered by all Himalayan Buddhists. In the 8th century, the Indian scholar Shanti Rakshita was invited by the king of Tibet, Trisong Tizin, and at that time they cannot establish the institution of Buddhism. So he asked the king to invite Padmasambhava, the Indian scholar, and he spread Buddhism to the Himalayan ranges and also in Tibet. At the eastern end of his epic journey through the Himalayan regions, the great Guru Padmasambhav is believed to have brought Buddhism to Arunachal Pradesh in the 8th century. The Bhimkhar caves, where the Guru meditated, are in the remote mountains at about 14,000 feet altitude. उनका हिस्ट्री में है कि गुरु पद्मसंभव ने उसी गुफा में मतलब ज्ञान किया था. There are several places that he visited, and there are marks and footprints left by the master, which are deeply revered by the people of Arunachal. वहाँ ऐसी सूखा रोक सी पानी निकलता है, बहुत अजीब सा है, तो वो हमेशा नहीं होता है. जब पूजा करेंगे तो ऐसे अपना अपना निकल जाता है. तो इसलिए अभी काफ़ी लोगों को मालूम हो गया. पहले तो इतना लोग नहीं जाता क्योंकि वो शमशान घाट भी है, तो कोई लोग डरता भी था. लेकिन गुरु बचे तो तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स का जो हेड है वो तो कहीं भी जाके बैठा था. The Taksang Gompa or monastery is high in the mountains of Tawang district. Taksang means tiger's den. The site was hallowed by the visit of Guru Padmasambhava. तत्संग जो है गुरुबची वहाँ था, तो गुरुबची ने देखा था आसमान से एक वाइट टाइगर जो है फ्लाइंग करके जा रहा था, उड़ के जा रहा था. तो गुरुबची को लगा अरे ये क्या है, ऐसे वाइट टाइगर ऐसे उड़ के जा रहा है, तो ये क्या है, क्या चीज़ है. तो गुरुबची ने उसको फॉलो करके वो किया, तो वो तत्संग में था. तो फिर वहाँ मेडिटेशन करके वो पहुँचा, तो वो तो एक डाकिनी था और टाइगर नहीं था. तो ऐसी करके वो होली प्लेस जो है शुरू ऐसे हुआ, इसलिए ये नाम जो है तत्संग बोल के रखा था. तत्संग मीन्स टाइगर डेन. Arunachal Pradesh is among the few places where the original Nyingma sect of Buddhism, which was established under Guru Padmasambhava, continues till today. जिमीथांग में तो पूरा टोटली न्यिंगमा हमारा सेट का है. वेस्ट कमिंग में काफ़ी न्यिंगमा का हमारा सेट का मंदिर है. लिस्ट में है, छू में है और दिरांग साइड में, तो वो सब हमारा सेट का है. एक्चुअली सूत्रा में तो पूरा बुद्धिज़्म में एक ही बात है, एक ही प्रैक्टिस कर रहा है. लेकिन तांत्रिक में ख़ास जो है हमारा सेक्ट में जोगछिन प्रैक्टिस जो है ख़ास है, स्पेशलिस्ट जो है वही है. वो जो है वो प्रैक्टिस जो है दूसरा सेक्ट में नहीं होता है. योगा में भी बहुत किस्म होता है. एक जो है अंदर इनलाइटनमेंट अटेन करने के लिए, उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं असली तंत्री जो है. The period of Guru Padmasambhava is known as the first great coming of Buddhism in the Himalayan and Trans-Himalayan regions. गुरु पद्मसंभव जी तो अभी वो हमारे आम इंसान के तरह तो शायद नहीं होंगे. वो तो उनके पास काफ़ी सिद्धि प्राप्त थे, बहुत कुछ थे, तो वो इच्छा अनुसार वो बहुत जल्दी से उसको विदिन
मतलब मिनट्स में या एक क्षण में पे बहुत दूरी का रास्ता उन्होंने तय कर सकता था, ऐसा होगा। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे 3-4 स्थान ऐसा है जिसमें गुरु पद्मा संभव स्वयं एक पेमा कथंग नाम का इन्होंने एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि उन्होंने इस जगह पर वो पधारे हैं। एक शिक्षण रोंग है जहाँ पे आपको सारोंग गोम्पा भी वहाँ पे स्थापित है। तो शिक्षण रोंग सिख तो चीता को कहते हैं, तो चीता का अलाय, तो शायद वहाँ में गुरु पद्मा संभव जी चीता के रूप धारण करके वहाँ मेडिटेशन किया था, और या कुछ वहाँ के इवल्स स्पिरिट्स ऐसा जो लोग थे उसको नष्ट किया था, ऐसा हम लोग माना जाते हैं। इसके अलावा भी कोई गुफाएं दावे करते हैं कि वहाँ पे गुरु पद्मा संभव जी आए थे और उन्होंने वहाँ देहांत किया था, ऐसा कई स्थान है। In the distant mountains of Arunachal Pradesh, the abode of clouds, far from the clamor of the material world, the philosophy of Vajrayana Buddhism is nurtured and kept alive till today. पूरा हिमालय क्षेत्र में आप देखिए, हम लोगों को बहुत बड़ा एक सौभाग्य कहें या एक मैं मानता हूँ प्रीशियस या हमारे एक गर्व के साथ में कह सकता हूँ, चाहे मोनपा हो, चाहे लद्दाखी हो, चाहे आपको ये लाहौल स्पीति के लोग हो, और चाहे सिक्किम से भोटिया लोग हो और लेप्चा लोग हो, और आप जैसे तमंग और शेरपास लोग हो, क्योंकि हजारों साल से एक बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण उस परिवार में एक संस्कार ऐसा डेवलप हुआ है। बच्चे पैदा होने का साथ साथ जब बोलने लगते हैं बच्चे, उसको सिखाना नहीं पड़ता है और वो मुंह से अपने आप ओम माने पैमे हूँ अपने आप बोला जाता है। We are at 12,780 feet altitude on the road from Bomdila to Tawang. Everywhere you see the expressions of the faith of the people. I am at Urjiling village. I was born here. My parental house is just down below the monastery. The structure behind me is Urjiling Monastery, which was originally a Nyingma monastery, but later on it was converted into this Gelugpa monastery after it was attacked by the Dzungar Mongols. Here it is the same place, it is the same house where His Holiness the 6th Dalai Lama was born. Attacks by Mongols wiped out the early Buddhist temples of Arunachal. And the oldest Buddhist monument which survives today is the Gorsan Stupa. It was built in the 16th century. The silent, vast majesty of this stupa awakens a deep sense of the divine. It is truly one of the great surviving stupas of India. Another of the oldest Buddhist sites in Arunachal is the La Gyala Monastery, literally meaning the place for meeting the divine. The original monastery here is believed to have been founded by Guru Padma Sambhava. In the 17th century, the great Tawang Monastery, which is one of the largest in existence today, was established at a strategic point connected by ancient trade routes. तवांग मोनास्ट्री बहुत पहले तो हमारे यहाँ आइसोलेशन था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मोनास्ट्री, और वैसे भी इस इलाका को हम कहते थे बेयुल, मतलब छिपा हुआ जगह। तो ये छिपा हुआ जगह सही था, उस समय सब लोग नहीं पहुंच पाते थे। तवांग मोनास्ट्री का बड़े मोनास्ट्री का ढांचा उस समय दिया गया था 5th दलाई लामा जी के समय में, 350 साल लगभग अभी हो गया है। अगर उसका आरंभ से अगर जैसे कि उसके ढांचा जो बिगिनिंग के बात करें तो 7th सेंचुरी से वो एग्जिस्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ।
Tawang remained in contact with the entire Buddhist region in the eastern Himalayas and Tibet. The monastery belongs to the Gelugpa sect, which was founded at the end of the 14th century. Till today, the monastery remains at a crossroads of culture, and its mural paintings were recently remade by Buddhist painters from Bhutan. The monastery is built along the lines of a traditional Buddhist sangram or vihara. It has a large central prayer hall and residential buildings for monks surrounding it. The Tawang Monastery has long been famous for its great library of manuscripts. This is a vast collection which includes philosophical works, almanacs, books for the guidance of monks, record books of various monasteries, and other books. Along with the monastery at Tawang, a sister establishment of nuns, an Ani Gompa, was set up on a nearby hill. In its seclusion, this nunnery preserves its gentle atmosphere and deeply religious traditions. This is a nunnery which is locally called Anigompa. This is older than Tawang Monastery, which is 300 years old, and it accommodates at presently about 45 or more nuns are there. They stay isolated in this place, and they are very much dedicated to the Buddhist religion, their practices, and they are doing well. And till now, whoever comes from outside and the local people have so much faith in them. So whenever there is some good days, auspicious day, then people visit here. They offer some like tea and whatever. I visited here when I was very, very small, and earlier we don't have that road connectivity, so people all used to come by walking. They are very nice. Sometimes when we want to perform puja at our village and all, we used to invite them. She said that how one of our neighbor is a very good woman, and she have joined this nunnery, and with her religious performance, she could help the villagers so much that she got so much influence by her friend. So she also liked to join, and finally she got the opportunity to join here. Yeah. She has no regret joining here. Instead, she feels proud, saying that even she used to pray that in the coming future, next life also, she wished that she will be a very religious woman or a man who will do something good for the society. Even though it is a very tough terrain also, they are doing so well. Until now, they have a good reputation. So I have personally more respect towards the nuns. Buddhist way of thinking, तो हमारे डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी बुद्धत्व प्राप्त करना है. तो अगर बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आपके मन की सोच, मन का सेट क्या होना चाहिए? जो भी आपको वस्तुएं हैं या कुछ भी है, एग्जिस्टेंस या फिनोमिना जो भी है इस दुनिया में, अगर उसके नेचर जो है क्या है वो जानना आवश्यक है. अगर आप उसके नेचर को अगर वास्तविकता में नहीं जाएंगे और बाहर से आप देखने लगेगा, तो आप शायद उसमें फंसते रहेंगे, उजल के बैठेंगे. बुद्धिस्ट फिलोसफी के मुताबिक उसका ओरिजिनेशन जो है, उसका एग्जिस्टेंस जो है, केवल इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन में ही है. इसके बगैर सारे के सारा एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है. जैसे कि हमारे लाइफ की वास्तविकता की बात करें, तो मैं लोगों से कहता हूँ लाइफ की वास्तविकता क्या है, लोगों को पता नहीं है. इसीलिए हम लोग कंफर्ट्स ढूंढते हैं, इस शरीर के लिए हर चीज़ के लिए पीछे हम भटकते हैं. तो लाइफ के वास्तविकता मैं कहता हूँ कि एक दिन मरना है. अगर वो लाइफ की वास्तविकता है, लाइफ के ओरिजिनेशन अगर एक दिन मरना है,
अगर आप उस कंक्लूजन में है, अगर आपके दर्शन या आपके सोच उसमें है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शंस अपने आप कंट्रोल हो जाता है। These prayer flags reflect the deep and simple beliefs of the people of the vast Himalayan regions. They are a constant reminder of the compassionate philosophy and heritage of Buddhism. इस पृथ्वी को हम लोग बहुत तेज़ी से इसको बदल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सारा चीज़ टेम्पररी है। ये सारा चीज़ जैसे कि इल्यूजन, जबकि हम फिल्म में देखते हैं तो जैसे जब फिल्म में हम खो करके बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे फिल्म हॉल के बाहर निकलते हैं तो फिर वो चीज़ रहते नहीं है। The masked chum dance is the ultimate form of meditation of the lamas. They pray and prepare themselves for many days before the dance. On the sacred ground, it is not the lamas who are to dance, but the deities themselves. By then, the lamas are to have entirely left behind their material concerns and their own personalities. They are to have become the deities. The meditating monks perceive an inner reality, far more true than the illusion of the material world around. For the eternal moment of the chum, earthly reality is suspended, desires and suffering forgotten, as the deities dance, blessing every being. After the approach and discourses given by Lord Buddha, Nagarjuna, the Indian scholar, used most of his energy in order to clarify the nature of phenomena. Shunyata is the ultimate position or nature of things. जिस दिन आप सर्वज्ञता को प्राप्ति हो जाता है, उसी दिन आप स्वयं बुद्धा बन गई हो। मतलब बुद्धा कोई दूसरा नहीं है। अब जो बुद्धा शाक्यमुनि, ये हमारे एक गाइड है सुप्रीम, ये हमारे एक सिंबल है। अगर बुद्धा शाक्यमुनि इस पथ पर चलते हुए इस फिलोसफी को ले करके अगर उस डेस्टिनी में अगर वो पहुंच सकते हैं, तो उस पोटेंशियल हमारे पास भी है। This is the land made sacred by Guru Padmasambhava of the Nalanda University more than 1,000 years ago. The search for the emancipation of the self continues here till today. It is the desire to rise above attachments and illusions of the material world.